So hi guys, welcome back to another gameplay week 8 of LUS weekly series. आप यहाँ देख रहे हैं we have our fourth match coming through with Miramar. यहाँ पे आप देख सकते हैं Miramar की मैप आप यहाँ पे आ चुकी है. It's almost a centralized flight path coming to Lazar and would end up towards El Paso. यहाँ पे जाते हुए flight path दिखाई दे रहा है. Almost सारी की सारी reachable areas आ जाती है unless you are going for the southern island near prison. That will be the longest run out there. Definitely बहुत सारी स्क्वाड यहाँ पे जाते हुए प्रिफरेबल नहीं दिखाई देती है. Earlier we had couple of squads who used to rotate out there, but अभी तो फिलहाल वो स्क्वाड्स जाते हुए नहीं दिखाई देती है. They prefer differently, but देखते देखते यहाँ पे we have 50 players alive with just 14 teams joining us today. Day by day हमारी टीम स्ट्रेंथ लो होती जा रही है. I don't know what's the reason, but let's work on it at some other point. But देखते देखते यहाँ पे सारी की सारी स्क्वाड्स are still making a move and they are already into the respected drop locations. But यहाँ पे definitely ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी स्क्वाड्स यहाँ पे लॉस लियोनस और अली कैब्रियल के पास कोई स्क्वाड जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है करंटली. ऑलमोस्ट ऑल स्क्वाड्स आर मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट लैंडिंग जोन्स. यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी स्क्वाड यहाँ पे प्रिपेरेबली लैंड अप नहीं करना चाहती है सदर्न आइलैंड्स के पास. ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स मोस्टली on towards northern islands currently, but will this be a game-changing moment because just CES has the longest run way coming through. इनके पास कोई squad नहीं होगी for a long run to fight against them, and this is what they have been prepared for right now. इन्हें पता भी नहीं होगा कि इतनी कोई भी squad इनके पास आई ही नहीं है currently. It's a pretty unfortunate thing for them, but ये चीज़ इनके लिए बहुत ही लकी हो सकता है if the zone comes on to them at right point. देखते हैं यहाँ पे जोन बन जा रहा है. दिस जोन इज स्लाइटली आउट ऑफ फेवर फ्रॉम द स्क्वाड, बट एक स्क्वाड जो बहुत दूर वादियों में हमें दिखाई दे रही है. इट्स अनदर देन टीम NADExwizards गोइंग थ्रू टुवर्ड्स द नॉर्दर्न आइलैंड टुवर्ड्स द राइट कॉर्नर. यहाँ पे डेफिनेटली ये प्रेफरेबली इनका एरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा था. नॉर्दर्न ईस्ट आइलैंड के पास यहाँ पे टॉप पे टीम दिखाई दे रही है एंड वील से डेफिनेटली सी देम मूविंग आउट pretty sooner. But देखते थे यहाँ पे फाइट्स होने ही वाली है थोड़ी देर में because the players hasn't got out proper armor, neither weapons out there towards. But देखते थे यहाँ पे एक नेड पॉपिंग करके दिखा था प्लेयर के द्वारा. And will this nade make a change is what's the question right now. That's a smoke coming through. So was not it nade, but ORZ is ready to fight against Team Vitality Esports at this point. But ORZ players are pretty much in a lower advantage. देखते थे यहाँ पे कॉफ़ी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं नेट डालने की कोशिश, बट नेट ही नहीं तो पॉप ऑफ होता हुआ देख रहे हैं. लकीली ही कम्स आउट एट द राइट मोमेंट और बेरली यहाँ पे सर्वाइविंग फॉर द श्योर. अगर यहाँ पे नॉक हो जाता तो इनके लिए दिक्कत बढ़ने ही वाली थी. दी ORZ वी नो द एग्रेशन ऑफ द टीम एंड हाउ दे प्ले. ORZ at any point of time could have rushed on them if the player would have gone down. एक और नेट यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे टीम के लिए दिक्कत का सबक होने वाला था सिंडा में डेफिनेटली. बट व्हाट अ ट्रीटमेंट being a lonely place. There are no men out there, but यहाँ पे 4 men down are still rotating in the vehicles and in search of a proper drop location. But Ali Gabriel would be the one that they're gonna preferably to move out because हम देख रहे हैं already इनके teammates वहाँ पे definitely जा चुके हैं. But यहाँ पे ये squad जो हम देख रहे हैं team 20 is still making a move and they're gonna be much more happier. Team Marcos is what we are talking about currently. ये squad भी बढ़िया लोकेशन फील्ड्स के यहाँ पे आ चुकी है. डिफरेंट दिस इज अ ग्रेटर लोकेशन कमिंग आउट एज आई सेड. Sasuke goes down with Vitality Esports charging on them. देखते थे यहाँ पे एक नॉक क्रूशली आ ही चुका है and here we see the pressure coming through. देखते थे यहाँ पे player are pretty much aggressively moving down right now. Speedy FTW is gonna go spray C. FPW is gonna go with those faster movements. Definitely यहाँ पे push करने की कोशिश. Assaulter will be the one, assassin will be the one who will be off guarding at this point. Definitely बहुत close in आ चुके हैं player and at any point of time he can go down is what I feel. Yes, he will be taken down this time is what I expected. दो तरफ से चार्जिंग होते हुए assassin जाएगा and instantly finish off भी कर दिया जाएगा. ORZ की स्क्वाड भी यहाँ पे चार्जिंग होती दिखाई दे रही है. इवन दे आर इन अ बीस्ट मोड सबक बन सकता है या फिर विटालिटी के पास अभी फिलहाल 4 मैन की जो स्ट्रेंथ है वो लो डाउन होते दिखाई देगी. द फाइट्स आर गेटिंग प्रीटी मच क्लोजर राइट नाउ. ORZ being in a downside currently with 1 man loss, but they are pretty much aggressively moving out as well. slowly hold on करते दिखाई दे रहे, but Vitality Sports are pretty much aggressively moving down currently. या तो हम छोड़ेंगे या फिर मारेंगे is what they are talking. Is the same way. Nade definitely popping one and the nade get deflected, but StoneX's life is almost barely surviving. Luckily, but देखते
स्ट्रेट डाउन कर दिया जाएगा, बट यहाँ पे 2 प्लेयर ड्रॉप डाउन हो जाते हैं. ससुकी कमिंग डाउन फ्रॉम बिहाइंड, दैट वाज अ क्लच मोमेंट. कर लेंगे फॉर श्योर डेफिनेटली. आइदर डू और डाई इज व्हाट्स करंटली फॉर देम. देखिए सर को भी यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश की जाती है रेक्स के द्वारा, बट लेक्स इज बिट डिनाइड इन दिस पोजीशन. देखते थे रेक्स यहाँ पे आ चुके हैं अपने यूएमपी के साथ भी. द मेटा ऑफ यूएमपी इज बीन अ ग्रेटर थिंग करंटली बिकॉज यूएमपी इन क्लोज रेंज इज अ बीस्ट इन दिस वाटर. डेफिनेटली से प्रेफरेबली लो एमओ भी जगह पकड़ती है बैग में, बट डेफिनेटली फॉर क्लोजर रेंज यूएमपी इज अ गुड वन. देखते हैं क्या यहाँ पे यूएमपी का कमाल दिखा सकते हैं बिकॉज इट्स जस्ट अदर क्लोजेस्ट टू वंस अगेन. यहाँ पे जो टीम भारी हो रही थी उन्हीं पे भारी पड़ गई. और दैट्स व्हाट वी हैव बीन that's what ORZ has been known for. backstab होते हुए यहाँ पे डेफिनेटली दो प्लेयर को खत्म कर दिया गया था ससुकी के द्वारा. एंड हियर कम्स द रश ऑन रेंजर. Can Rangers survive the rush is the question right now because the players are gonna go out with nade, smokes, all the utilities what they have, but Rudra out there is still waiting off for a moment where यहाँ पे definitely jump off करने की कोशिश करेंगे Ranger and यहाँ पे cover up करने के लिए Rudra definitely will be out there for sure. Rudra के पास भी फिलहाल है UMP and I think Ranger should jump down and player होते हैं. रेक्स यहाँ पे spot down कर दिया. This is what was the strategy. As I said, the player would definitely should duck down there. Yes, he does down. रेक्स को spot करने की कोशिश की जाएगी. प्लेयर को यहाँ पे literally damage देने की कोशिश रुद्र के द्वारा, and he'll be definitely going for it as a point. But Ranger is also pretty much closer. और देखते हैं पे स्टोनिक्स इज फ्लैंकिंग वंस अगेन. ये फ्लैंक एंगल डेफिनेटली सारी टीम के लिए दिक्कत का सबक होता है यूजुअली. दिस इज द ओनली फाइट्स व्हिच आर हैपनिंग करंटली इन हैसेंड. एंड देखते हैं यहाँ पे नेड थ्रो किया गया था रुद्र के द्वारा. स्टोनिक्स आर मेड अ फ्लैंक एंगल. ही हैज कपल ऑफ बैंडेज फॉर हिम. यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ये दिक्कत होने वाली है विटालिटी स्पोर्ट्स की इफ दे डोंट फाइंड हिम एल्स जस्ट लाइक व्हाट ससुकी डिड एलिमिनेटिंग 2 प्लेयर्स. यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे एक और 2 प्लेयर होंगे यहाँ पे का खात्मा यहाँ पे हो सकता है. इफ स्टोनिक्स ओनली स्पॉटेड स्टोनिक्स हैज स्पॉटेड रुद्र एंड रुद्र डेफिनेटली शॉट also been pinpointed right now. He can't make a move. He can only do is a fall back, either smoke and wait out for the moment for the other players to make a mistake. But the Ranger has come down, holding out there, and 0 goes down at that point of time. As I said, you StoneX was a flanking player. 1 HP आ चुके हैं Ranger and Ranger has to heal up. Able to heal up as I said. The player was spot fight. देखते हैं player को spot करेंगे and he's pushed down. देखते हैं StoneX को भी eliminate कर देंगे. There was a quick spray from our Ranger and quickly यहाँ पे देखते थे team eliminate हो ही जाते. That AKM shots I would definitely say connection बना जाती है luckily and elimination यहाँ पे हो ही जाते हैं. Already I would definitely say StoneX की life वहाँ पे कमी थी. He should have gone for the healer up moment instead of rushing on him because यहाँ पे बात कहना चाहूँगा कि रेंजर की लाइफ उतनी कम नहीं थी जितनी स्टोनिक्स की थी. बट ये फाइट यहाँ पे हो चुकी है. एलिमिनेट वाइपर हैव हर्ड दिस आई थिंक. इफ दे हर्ड देन यहाँ पे रश करना बढ़िया ऑप्शन हो सकता था. बट डेफिनेटली आई वुड से दैट प्लेयर वोंट नो दैट हाउ मेनी प्लेयर्स आर आउट देयर. दैट्स द अदर क्वेश्चन व्हाट दे हैव टू देखते साइड्स की स्क्वाड आज 3 मैन के साथ ज्वाइन होती दिखाई दे रही है. वी हैव हंटर मिसिंग आउट बिकॉज लाइनअप. बट देखते हीट code reds, yes, H8 code B is what we're talking about. The players are out there. Code B are still looting around. यहाँ पे एक किल के पास मैच दिखाई दे रही है. बट वी आर इन श्योर दैट लाइक कौन सी स्क्वाड के पास यहाँ पे फाइट हुई थी. एल्पोजो में ये फाइट्स हमें दिखाई दे रही हैं एंड दे शुड हैव फिनिश्ड अप दिस प्लेयर्स इज व्हाट आई फील. नो, द प्लेयर आउट देयर आर स्टिल सर्वाइविंग. टीम 20 team team Marcos is still out there. Definitely यहाँ पे higher reach का फील्ड में यहाँ पे ये प्रेफरेबली मूव करना चाह रहे हैं. बट दिस इज अ गुड चॉइस एज वेल. बट करंटली there is no way that someone can trap down at that point of time. But देखते हैं यहाँ पे 2 players hit 1 HP की squad के players यहाँ पे rotating होते हुए दिखाई दे रहे हैं. They are pretty much into the zones, are holding around the compounds and they haven't much engaged. Currently engagement यहाँ पे कोई भी squad की इतनी दिखाई नहीं दे रही है unless that was early fights which we just saw in Hassend elimination of ORZ. At this first point देखते थे 14th number पे ORZ eliminate होते दिखाई दे. They are going down currently in the points table as well. I think they secured 2 points and the 2 points can make a difference but not the huge one which we're expecting out from ORZ as we do usually. But game है तो obviously ups and downs सारी squads के साथ रहते हैं. They should definitely work out. कल भी इनका early elimination हुआ था. आज भी अर्ली एलिमिनेशन के कारण टीम रोटेटिंग और एलिमिनेट हो चुकी है अर्ली फाइट्स में.
But यहाँ पे OR old school Reapers are still making a move, and they have a pretty good journey to go with a new player, none other than Nikita, joining us today in this custom. Welcome to the game. So I would definitely say for the player, as he is joining for the first time with the old lineup, बट क्या यहाँ पे ये स्क्वाड जो मैं स्पेक्टेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे डेफिनेटली आरसीबी के एक प्लेयर आउट हुए थे डोरेमोन, बट आई थिंक आरसीबी की पूरी स्क्वाड आई थिंक फॉर अनफॉर्चुनेट रीजंस दे आरंट into the game currently, but the whole squad is out there lying around. There should have been an unfortunate reason. You can just see the players out there, 2 kills going around. यहाँ पे देखते देखते ये भी squad कहाँ तक जाती हुई दिखाई देती है. We'll have to definitely wait and watch. Both players are out there with no proper equipments because they are being AFK alongside. और देखते हैं यहाँ पे कोई भी स्क्वाड के पास भी किल नहीं आने वाली बिकॉज देर आउट देयर इन द कॉर्नर. नेक्स्ट जोन शिफ्ट होते ही वो प्लेयर डेफिनेटली देर आउट ऑफ जोन एज वेल. क्विकली स्लो एंड स्टडी वहाँ पे एलिमिनेशन दिखाई देगा उस स्क्वाड का. एंड विल जस्ट वेटिंग आउट फॉर दी मैच टू गेट मच अग्रेसिव राइट नाउ. देखते थे ओल्ड स्कूल रीपर्स की जो मैं बात कर रहा था, ये स्क्वाड थोड़ी मूविंग होती हुई दिखाई दे रही है. दे आर प्रीटी मच मूविंग इनटू द अदर स्क्वाड. अनदर 1 HP के पास ही मुझे दिखाई दे रहा है. ये फाइट्स होने वाली है. नेक्स्ट अपकमिंग फाइट्स इज व्हाट वी आर द फाइट विच आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड ऑल्सो गाइज डू चेक आउट यूट्यूब चैनल हमारा जो है लेवल अप स्क्रिम्स. वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड गेम प्ले दिखाई देगा ये वीक. दैट्स ड्यू टू माई बैड इंटरनेट कनेक्शन एज यूजुअल. तो आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट ASAP. अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी लाइव स्ट्रीमिंग वंस अगेन so that you can enjoy the live stream as well. Offline is what I'm doing right now, recording on the device and just publishing onto the YouTube channel. Maybe overnight आज आपको दिखाई दे जाएगा gameplay. And do support us. And we do have another gameplay which is another than level up championship जो हो रही है level up LUS की. That's still open, and do invite your friends and invite the teams which you want to fight against currently. तो definitely वो मैं prefer भी कहना चाहूँगा. There is a post out in level up scrims Instagram channel which you can share around. That will be a great help coming to the squads. चलिए हम फिर पे गेम प्ले पे आते हैं. देखते हैं यहाँ पे जोन बन जाता है यहाँ पे. I think it is almost a centralized one coming through Ricardo. पावर ग्रिड के पास भी हमें दिखाया ये सच पावर ग्रिड सी. बट यहाँ पे हसाद हाजिल टेक्स डाउन HJ को यहाँ पे देखते थे. टीम स्क्वाड की दिक्कत यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. As I said, this squad is going down 1v1. Toxic Agile goes down and we see the other man goes down as well. देखते हैं प्लेयर न्यू शॉट को कंफर्मेशन ले लिया जाएगा. दिखाई दे रही है. And here we see the team man play, one man get the other one is also elimination currently. क्या यहाँ पे एक man can he because the team is on #1. यहाँ पे डेफिनेटली एलिमिनेट होंगे तो they'll be thrown down once again. और एंड XYZ को यहाँ पे डेफिनेटली लीड अप करना पड़ेगा. यहाँ पे बैक स्टैब होती दिखाई देती है. टीम 9 एग्रेसिवली मूव्स आउट. क्विकली grabs those kills. बट देखते हैं यहाँ पे टीम 3 भी आ चुके हैं. विटालिटी स्पोर्ट्स एट द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट इन दिस फाइट्स. यहाँ पे डेफिनेटली इनके पास घायल बंदे दिखाई दे सकते हैं. यहाँ पे टीम 1B is what for ES is. We have them out there with 2 players with 2 new teammates coming around. क्या यहाँ पे players spot किए जाएंगे या फिर elimination होता दिखाई देगा. The players are still waiting out. Vitality Sports has been spotted as well because they know the shots came through. क्या Vitality Sports के पास proper information है कि वहाँ पे कितने बंदे हैं फिलहाल because Rudra is moving out aggressively. Ranger is also making a move currently right behind him and यहाँ पे quickly spot किए जा चुके हैं players. What I feel because there are just 3 players out there as of now. But यहाँ पे definitely backstab हो सकती है team as well because the OS can rotate in at any point of time. Definitely एक player को spot कर दिया गया. The player was almost into the areas. एक nade यहाँ पे definitely quickly would be a great choice for a team. Vitality Sport will the player spot him. But देखते हैं कि team 9 आपको दिखाई दे रही है. They are pretty much holding around the compound and यहाँ पे एक player जो trap off हो सकते हैं other than Coffin is the one which you are talking about. Coffin यहाँ पे कभी भी ट्रैप इन हो सकते हुए दिखाई देंगे. बट 2 प्लेयर वहाँ पे बहुत दूर खेलते हुए दिखाई दे रहे फ्रॉम B1. I mean 1B प्लेयर वहाँ पे नीमो. I think it's Nemo 20 OP and Hazel is what we are talking about. The both players are out there and they came up pretty much quickly close to these players. देखते हैं यहाँ पे थ्रो किया गया smokes and 1B अभी किल फीड पे आते दिखाई दे रहे players which just went down and yes देखते हैं यहाँ पे RCB के players 2 बचे हुए थे वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं. RCB goes down as well in the players zones. देखते हैं बट यहाँ पे एक और फाइट्स यहाँ पे एंगेजमेंट होती दिखाई दे रही है. There are other fights as well coming around. Will this was this the fights which are exploding. I think CES की squad
हमें अभी फिलहाल दिखाई दे रही पावर के पास, पिकाडो के पास होल्ड ऑन करते हुए स्पॉट रुद्र गोज डाउन विद दैट नेड कमिंग थ्रू द प्लेयर। डेफिनेटली रुद्र भी यहाँ पे जाते हुए दिखाई देते, देखते देखते एक नेड जो था नीमो का रुद्र को खत्म करते हुए दिखाई देता है। एंड द एलिमिनेशन ऑफ विटालिटी स्पोर्ट्स एट #11 इज अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर श्योर, बिकॉज टीम बढ़िया अग्रेशन के साथ मूविंग करते हुए दिखाई दे रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो अग्रेशन यहाँ पे कूल डाउन हो जाता है इसके सामने। बट इसकी स्क्वाड बढ़िया गेम प्ले दिखाते हुए वंस अगेन विद दोस प्लेयर्स ज्वाइनिंग इन करंटली कैंप स्क्वाड प्रॉपर्ली खेलते हुए दिखाई देगी, या फिर ऑलरेडी इनके पास भी एक लॉस हो चुका है, has been lost out despite they have 3 man alive currently. Coffin will be the one out there to be watched, but sides की squad भी हमें फिलहाल रोटेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं. They are right in the power grid and this would be the place where we will see fights coming through shortly. But यहाँ पे definitely team 20 is also making a move. They are pretty much slowly moving in currently. यहाँ पे definitely spot करने की कोशिश edge squads खेलते हुए preferably दिखाई दे रही हैं. Viper Esports are still out of zone. They'll be rotating in as well as second zone closes right away right now. यहाँ पे closing होते हुए दिखाई दे रहा है second zone and the teams are almost moving near San Martin के पास भी team 13 पे move on होती दिखाई दे रही थी. Shots इन्हीं के player पे यही के प्लेयर पे शॉट्स दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं. बट CES इज ऑल्सो आउट देयर नियर पिकाडो प्रॉपर्ली यहाँ पे होल्ड ऑन करते हुए दिखाई दे रही है. हायर रीच इन द फेवर ऑफ टीम CES करंटली, बट इनके ऊपर एक और स्क्वाड आके चढ़ सकती है. दैट्स अनदर देन टीम which we are talking about, the other one which was around the hills, but वो टीम बहुत दूर दिखाई दे रही है फिलहाल. they are pretty much safe currently, but यहाँ पे टीम 1 HP के ऊपर डेफिनेटली कोई तो स्क्वाड इन पे चार्जिंग होती दिखाई. आई थिंक इट वाज CES are just the player got damaged by themselves because दोनों के प्लेयर यहाँ पे डेफिनेटली डैमेज दिखाई दे. आई थिंक CES Rajat and Captain both are out there, but I think they haven't found out any of the players currently. CES is still moving out currently. There are no much fights coming around, but I'm still curious to see like कहाँ से teammates पे shots आए थे. I think they hopefully might have jumped down the buildings and maybe fell down. That's a possibility what I can see currently. But यहाँ पे I definitely say I think like Zinrax is the one which you're watching about. This would be a crucial thing for him if someone spots him on the top. Definitely यहाँ पे knock हो ही जाएंगे. That's the other thing. But elimination भी यहाँ पे बहुत जल्दी हो सकता है. Taukir is also trying out. देखते थे tips and tricks के चक्कर में यहाँ पे healings इनकी बर्बाद होती दिखाई दे रही है currently. Another bandage being popped in, but यहाँ पे zone definitely closing होता दिखाई दे रहा है. And here we see Ascenda के पास से zone जाता और quickly यहाँ पे flavorize हो जाता है team. None other than team 4 man down के पास. Definitely the team is out there in the centralized location currently. मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इनके पास centrally यहाँ पे एक और air drop दिखाई दे रहा है. I think it's air drop number 2. यहाँ पे AW में आपको मिलेगी with a ghillie suit for this desert areas. I'm definitely properly यहाँ पे कोई भी squad मैं देख रहा हूँ आजकल they're not going out for drops and they're just moving out in the aggressively moves. But यहाँ पे CES is also ready out, is currently ready to move in. यहाँ पे मिनी के द्वारा मिनी फॉरेस्ट के कॉम्बो के साथ Rajat is trying to spot anyone, but unfortunately spotting isn't a big deal right now. They can't spot each other because the players are pretty much far away rotating it, but old school people are known for early rotations and that's what they are planned for, that's what they do. And as usual, as I said, the team had also made a move right now. They will be going out for the centers is what I've seen old school Reapers holding around. Old school Reaper पहले से जानते हो सेंटर में होल्ड कर दिया, and as usual they are still in hunt of kills. That's what I would say. Old school Reaper is also known for highest kills, one of the highest kills taken by a team individually. कस्टम्स में हम पहले भी देख चुके हैं ओल्ड स्कूल Reapers क्या कर सकते हैं दूसरे स्क्वाड्स के. एंड द थिंग इज ओल्ड स्कूल Reapers are already qualified in top 32 if you are curious to know as well. बट देखते थे दूसरी स्क्वाड्स में कह सकता हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं है. सारी की सारी स्क्वाड्स के पास यहाँ पे he's going down on his knees. That was a pretty much late reflex by Hazel for sure. देखते थे Hazel मूवमेंट के साथ एक प्लेयर को टेक डाउन कर देंगे. देखते देखते यहाँ पे रश आता हुआ दिखाई दे रहा है. टीम जो दूसरी टीम में दिक्कत बनती हुई दिखाई दे रही है. प्लेयर गोज डाउन, नेड आता हुआ दिखाई देता है. देखते थे एक प्लेयर को टेक डाउन कर लेगा, दूसरा प्लेयर भी एक ही नेड के साथ दो प्लेयर टेक डाउन होते दिखाई दे रहे हैं. की कोशिश एंड देखते थे रजित कंफर्म्स 1, बट यहाँ पे निमो ओपी इज राइट नाउ. 2 प्लेयरों को खत्म कर देंगे एंड देखते देखते एक और प्लेयर जो थे उनको भी खत्म करके दिखाई देंगे. we'll have to wait and watch. It's gonna be a 1v1 fight coming through. Will this man survive is the question right now. We'll have to definitely see Nemo OP
This is the man. This is the only man out there definitely. यहाँ पे इनके सामने भी एक ही player दिखाई दे रहा है. It's only on the fight and the players should spot each other at this point of time. I mean, teams ES के player को spot करने की कोशिश की जाएगी and here comes the 6x. अब इस player के द्वारा player को spot करने की कोशिश यहाँ पे throw off. तो यहाँ पे quickly ADS में शॉट लेने की कोशिश निमो के द्वारा, बट यहाँ पे CS के प्लेयर भी quickly शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट 1 HP के साथ देखते देखते ये रिफ्लेक्स बढ़िया काम होते दिखाई देगा, बट थर्ड पार्टी होती हुई एलिमिनेशन भी हो जाती है स्क्वाड की. दैट्स प्रीटी अनफॉर्चुनेट फॉर हिम. ही गोज डाउन बट ही टेक्स द अदर मैन डाउन. देखते थे इवन ही गोज डाउन विद टीम 13 चार्जिंग ऑन एट द लास्ट मोमेंट. डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ 2 किल इनके खाते में आ सकती थी. द प्लेयर्स had made an early decision for shooting out the players. देखते हैं अभी ये फाइट भी क्लोज इन होती दिखाई दे रही है एंड these fights are going around and OS के पास भी यहाँ पे शॉट्स आने की कोशिश दिखाई दे रही है, बट देखते थे यहाँ पे ये जो फाइट्स हो रही थी टीम वाइपर यहाँ पर वाइप आउट होते हुए दिखाई दे रही है. आई थिंक दे हैव वाइप्ड आउट कपल ऑफ प्लेयर्स एंड यहाँ पे 2 जगह से साइमल्टेनियसली फाइट्स हो रही थी और यहाँ पे कॉम्पाउंड में डेफिनेटली जहाँ पे बहुत देर से टीम होल्ड कर रही थी वहाँ पे एक और टीम स्लैम इन करती है. देखते देखते उनका भी एलिमिनेशन हो ही जाता है. द टीम which were on top 2 are right now eliminated currently. और देखते the tables can turn around right now. As I said, definitely those squads जो लड़ रही थी both are out there. Vitality Esports was one which was the one which we were talking about earlier, but वो team को जो eliminate करती है, the other team comes down and they fight back and they take them down as well. EX की भी squad आप eliminate होती हुई दिखाई देती है and देखते देखते एक और squad CES भी eliminate होती हुई दिखाई देती है. That was an insane fight coming through, but team 13 finally फेवराइज होते हुए इनको क्विकली दूसरी टीम को भी रास्ता दिखा देते हैं. अदर नीड वॉरियर्स क्विकली थर्ड पार्टी करते हुए इनके पास एक किल सिक्योर कर दी जाती है बिकॉज द प्लेयर वाज जस्ट बेयरली सर्वाइविंग ऑन एन HP. एक मिनी का टैप शॉट लगते ही वो प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है एंड यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स आर प्रीटी मच मूविंग आउट ऑफ जोन. यस दे आर आउट ऑफ जोन एंड देयर ओनली वन स्क्वाड. एज आई सेड, ओल्ड स्कूल रीपर्स आर स्टिल इन फेवर ऑफ जोन एंड टीम वाइपर आर आल्सो into the zone slightly and team को करना पड़ेगा. The players are still floating around with their buggies and यहाँ पे as I said team 4 man down are in the favor of zone as well. It was not Viper, sorry, it was team 4 man down what I was talking about. देखते थे ये squad भी यहाँ पे फेवराइज हो जाती है जोन में and the player are pretty muchly going against the gravity. quickly यहाँ पे बग्गी इनकी चढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है. स्ट्राइट स्लोप पे डायरेक्टली यहाँ पे बग्गी चढ़ती हुई दिखाई दे रही है. That's pretty much is what we see usually, but ORZ is what I would definitely, old school Reapers is what I would definitely say properly compound hold on करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे दिक्कत बढ़ सकती है if the player had some good scopes within can Titan spot the player because he's going for the highest one in this whole area. Definitely यहाँ पे Titan बहुत ही हाइट पे आ चुके हैं. Does he have a proper scope is what the question right now is what I will feel. क्या यहाँ पे इनके पास properly scope है? I don't think so he can maximize up to maybe 6x because he doesn't have any snipers currently. He just has an AR, both ARs with one being just a tap shot or burst gun, which is another than M16A4 is what he has. I think it's pay in scope. Unfortunately, he doesn't have any scopes. I think both are M4 and red dot के साथ इतने high hill पे जाने I think it's not a good choice for a team. Are a player I would definitely say unless you can spot someone from such a long distance. Usually my personal experience I can't spot a player which is in a long range unless we spot them using either 3 or 4. That's what the accuracy shows. But यहाँ पे definitely कुछ और plan के साथ 4 man down के player यहाँ पे spot करने की कोशिश कर रहे हैं and he might quickly collide with the other team as we just saw around. Definitely यहाँ पे के ठीक पीछे एक squad यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है. It's other than team 20 team Marcos is what you're talking about. Drop का spot कर दिया गया है. Dora, can he quickly go down for the drop? I think he heard the buggy currently. Definitely यहाँ पे player को बग्गी की sound आ ही चुकी होगी because 4 man down के जो player है he's going down as well currently. देखते yes, Titan made a quick decision of falling back and he's reuniting with his teammates and giving information and quickly. I think he just went out there to scout the whole area कहाँ पे movement होती दिखाई दे रही है, but Vipers are still out into this compounds and यहाँ पे definitely यहाँ पे next zone would decide कि कहाँ पे teams move on करना start करेगी. but old school Reapers के खाते में यहाँ पे definitely बहुत सारे opportunities हैं. if they look around they definitely have a lot of
opportunities around going around. Definitely I would definitely say Vipers की squad यहाँ पे दिखाई देगी. Then we see the zone going around totally in a different side, but sides की squad यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. Side takes the player down. Yes, the kill feed is running in slow. It was sides who just lost against the other team is what I would say. उसको के I mean Zod is just rotating around and Zod के लिए दिक्कत बढ़ सकती है player spot. I think BTs I mean these are just right next to the players. As I said, it's another than a team. Titan OP is spotted right now. Titan OP is placed on him and Zod को यहाँ पे definitely open में जाने की गलती कर रहे हैं Zod, and I think quickly H1 but unlucky H1 I would definitely say यहाँ पे quickly shots connect होते दिखा रहे हैं. God Pro they pretty much went openly. What I said, definitely felt 4-man down to Titan. OP को spot कर दिया गया open definitely, but Pai goes down with those nades coming through. One HP के player definitely made it spot करने की कोशिश की जाएगी. Titan is gonna go flanking around. क्या यहाँ पे spot करने की कोशिश करे जाएंगे. Yes, he'll be spotting Zod and Zod यहाँ पे quickly 1 HP के साथ quickly healing up as well. देखते देखते यहाँ पे ये टीम यहाँ पे बिखरती हुई दिखाई दे रही है. ओल्ड स्कूल रीपर्स के लिए यहाँ पे बहुत ही टेंशन वाला माहौल बन चुका है. As the players are pretty muchly aggressively moving around. देखते हैं नेड किया गया है. Pile is also currently God Pro has gone down. Zod is also I mean Zod पे भी shots आने की he takes him down but unfortunately backstab होते हुए यहाँ पे quickly ORZxESports भी eliminate हो जाती है. That's an insane shots coming through. I think I'm just curious कि किसने यहाँ पे kill लिया. I think it was Taukir who just blasted the vehicle and quickly यहाँ पे eliminate कर दिया गया था ORZxESports को. Yes, it was the vehicle burst out that took the whole squad down. I think who took the vehicle first? I'm still curious to know like क्या हो रहा था. Unfortunately यहाँ पे देखते हैं एक और प्लेयर का एलिमिनेशन हो जाता है. अवन यहाँ पे क्विकली ट्रैप शॉट्स के साथ 1 HP के प्लेयर जो बाहर मंडरा रहे थे उनको क्विकली बाहर का रास्ता दिखा देते हैं. ही गोज डाउन एज वेल. बट यहाँ पे वी हैव 5 स्क्वाड्स 13 men alive and with the team has totally 3 finishes and they're still going around. देखते थे ये जोन भी यहाँ पे क्लोजर होता दिखाई दे रहा है. एंड वी हैव couple of locations जहाँ पे क्विकली टीम्स प्रेफरेबली मूव करना चाहेगी. बट एज आई सेड टीम Marcos are rotating in and they found a proper compound, but height advantage is what it makes the whole game changing scenarios. The whole squad of I think a team Wolves Vipers are still surviving out there. देखते थे यहाँ पे Vipers के पास इतना टाइम है कि वो यहाँ पे survive कर पाए. But I think INX is slowly fighting against his own last couple of bandages and I think it's the elimination of INX at hashtag INX at hashtag 5. No, I don't think so. I think the player has different plans currently. Quickly player makes a move but Viper has taking down the other teammates as well. देखते हैं यहाँ पे एक और प्लेयर को टेक डाउन कर देंगे. यहाँ पे डेड वॉरियर्स आर फाइटिंग डाउन ऑन द नीज. देखते हैं 2 प्लेयर को टेक डाउन कर दिया गया है. आई थिंक द प्लेयर्स आर क्विकली मूविंग अराउंड. देखते हैं यहाँ पे हील अप करेंगे प्लेयर एंड देयर इज वन मैन आउट देयर वंस अगेन हु इज ऑन हिज नीज. कैन द टीम मेक अ मूव. यहाँ पे देखते हैं एंड यूटिलिटीज चारों तरफ से गिरते हुए दिखाई दे रहा है. रावण गोज डाउन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट देखते हैं वाइपर is gonna go aggressively in the fight and that is the one which will quickly rotate in. देखते थे यहाँ पे quickly एक player का नॉक जो था कंफर्मेशन में आता हुआ दिखाई देता है. ओके कम टू फाइट ओवर एंड ओके के ऊपर स्पॉट करने के चक्कर में शदाब गोज डाउन. शदाब हैज क्विकली ओके यहाँ पे क्विकली थर्ड पार्टी करने के लिए भी आ जाते हैं. यहाँ पे 4-5 किल तो ले सकते थे बट अनफॉर्चुनेटली बैकस्टैब टीम्स होते दिखाई दे रही दिखाई दे रही है एंड दैट्स व्हाट वी सी. थर्ड पार्टीज कमिंग अराउंड. देखते हैं यहाँ पे इनेड वॉरियर्स की स्क्वाड वाइप आउट हो जाती है क्विकली और देखते थे 3 स्क्वाड बचती हुई दिखाई दे रही है. वी हैव 1 man फ्रॉम INX स्टिल सर्वाइविंग आउट देयर. लकीली वी हैव वाइपर्स स्टिल सर्वाइविंग and I think yes it's Viper still surviving and we have team Marcos still surviving as well with 2 men alive and quickly 6 man 6 players with 2 versus 2. This is the best way I've ever seen someone throwing around the utilities but the utility won't work because it went out pretty far away. एक kill इनके खाते में आ सकती है at this point of time if you spot the player. Yes but spotting थोड़ी देर से हुई but I think kill किसी और के हाथ में चली गई unfortunately and that's what we definitely usually see. देखते हैं 3 versus 2 का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है. Vipers versus Marcos. Team Marcos who can clutch out today because team
वाइपर देखते देखें यहाँ पे प्लेयर को स्पॉट कर दिया जाएगा, क्विकली एलिमिनेशन का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा. एंड वी हैव RIP are the player out there. Will he be a game changer right now? Because Shadab is already been spotted by him, and यहाँ पे डिफरेंट ये भी स्पॉट कर दिए गए हैं. And he'll have to either aggressively make a move or he'll be stabbed down by the whole squad. स्पॉट करेंगे, but that doesn't connect as well. But यहाँ पे लेट गए थे. That's the pretty much bad decision from him. I would definitely say वाइपर के खाते में आज का गेम प्ले वाइपर esports के खाते में जाता हुआ दिखाई देता है. But Marcos coming with the #2 and #3 to INX with a wonderful gameplay and getting backstab as usual. That's pretty insane for all of the squads. But yeah, gameplay overall is what I would say. Till then, guys, do like and subscribe our channel. Level Up Gaming, Level Up SCRIMS around all the platforms. Instagram, we have a YouTube as it's the video you're watching currently, and we have a WhatsApp group जहाँ पे आप हमें follow कर सकते हैं. The link would be in the description. Also, do check out our event, which is another LUS Championship Season 1 for all the underdog teams out there. उनके पास एक opportunity होगा. We'll have some changes in the pricing. We would definitely give you royal passes this time instead of a cash amount, but certificate for top 3 teams as usual वो दिखाई देगी. बट यहाँ पे top 8 teams को participation की certificate मिलेगी, and runner up एज यूजुअल जो टीम टॉप पे गई उसे विनर और रनअप सर्टिफिकेट्स मिलती हुई दिखाई देगी टॉप 2 टीम्स को. टिल देन गाइस, सी यू टुमारो एट #10 विद अनदर गेम प्ले एट सेम टाइम एट द सेम लोकेशन इन BGMI बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में. आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. एज यूजुअल वी डोंट हैव एनी अदर वे, बट सून विल बी broadcasting around, like we have some plans for Valo as well. Valo के लिए आप वेट कर सकते हैं, and quickly we'll be announcing that as well. Till then, goodbye.